Hey everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing good. So this is the session 2 of Faux Calligraphy जिसमें हम सीखने वाले हैं lowercase alphabets. I hope आप लोगों ने इसका सेशन 1 जो था Faux Calligraphy Strokes ज़रूर देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. So without wasting much time, let's get started. तो Faux Calligraphy में alphabets लिखने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. Step 1 will be identifying the upstrokes and downstrokes. Step 2 will be given additional line to the downstrokes. And step number 3 will be fill the gaps. So now let's understand these 3 steps practically. Now lowercase alphabets will consist of all or few strokes which we learned in the previous session. Example, अगर मुझे लिखना है lowercase alphabet A, it will comprise of entry stroke plus O stroke and a downstroke. This is the entry stroke, O stroke and a downstroke. This will be our alphabet A. Now alphabet लिखने के बाद जो हमारा step 1 है वो है identification of thin and thick strokes. तो मैं यहाँ पर एक रेड मार्कर की हेल्प से यहाँ पर आपको एरो के डायरेक्शंस दिखा रही हूँ. नाउ हमारा स्टेप 2 जो है वो है इंटरनल स्ट्रोक्स में एक एडिशनल लाइन ऐड करना. नाउ स्टेप 3 विल बी फिलिंग द गैप्स. Take an example of lowercase alphabet B. Now I have written the ascender stroke plus O stroke. So this will become our alphabet B. Now again हम हमारे यहाँ पे जो 3 steps हैं वो follow करेंगे, which is identification of upstroke and downstrokes. Now step 2 is going to be add an additional line to the downstrokes. तो जो हमारे downstrokes हैं मैं वहाँ पर एक additional line add करूँगी. As I previously told you कि आपको जो वो line है वो internally add करना है. So I am adding a line internally. तो step 3 में जो हमने internal line add किया है उसके जो gaps हैं हम उसे fill कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा for calligraphy lowercase alphabet B. तो सिमिलरली C लिखने के लिए मैं लिख रही हूँ entry stroke plus half O stroke. So again following those 3 steps, first will be identification of upstroke and downstroke. Step 2 में हम ऐड करेंगे एक additional internal line और step 3 में हम उस line को fill कर देंगे. This will be our lowercase alphabet C. नाउ अल्फ़ाबेट डी लिखने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है एंट्री स्ट्रोक प्लस ओ स्ट्रोक और प्लस असेंडर स्ट्रोक. नाउ अगेन फॉलोइंग 3 स्टेप्स which is identification of upstrokes and downstrokes. In step 2 we'll add an additional internal line to the downstrokes. And in step 3 हमने जो additional line ऐड की है उसके gaps को fill कर देंगे. Now this is our lowercase alphabet E. Now again following the steps, identification of upstrokes and downstrokes. In step 2, मैं यहाँ पर एक ऐड करूँगी additional internal line and in step 3, मैं उस line को fill कर दूँगी. ये हो गया हमारा lowercase alphabet F. Now again identifying the upstrokes and downstrokes. Step 2 will be adding an additional internal line to the downstrokes. Step 3 will be filling the gaps. Now next will be lowercase alphabet G. Entry stroke plus O stroke and a descender stroke.
Now again, following all the 3 steps, identification of upstrokes and downstrokes. In step 2, we'll give an additional internal line to the downstrokes. And in step 3, we are going to fill the lines. Similarly, writing all the other alphabets and following the same steps. Now for I, entry stroke plus a downstroke. Step 1 will be identification of upstroke and downstroke. Step 2 will be adding an internal line, and step 3 will be filling the gaps. Now J is the descender stroke only plus entry stroke. Now again identifying the upstrokes and downstroke. In step 2 I am adding an additional internal line, and in step 3 I am going to fill the gaps. Similarly, हम बाकी के alphabets भी लिखेंगे using the strokes which we learnt in the previous session and following all the 3 steps which we learnt in this session. गाइस आज के सेशन में बस इतना ही. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बाकी के लोअर केस अल्फाबेट्स. Do try this simple for calligraphy and let me know in the comment section below. आपके जो भी डाउट्स, क्वेरीज, सजेशंस हैं यार, ऑलवेज वेलकम. मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. टिल देन बाय बाय.